Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is a recorded lecture for mining engineering fundamental, and in this lecture we will be discussing the importance of safety in mining. Safety के बारे में ये मेरे ख्याल में this is something which proving its importance. We don't need to improve its importance. अगर आप हैं, if you are healthy or if you are alive, only then the work will go on, then the world will go on. Otherwise, the world ends for you. So safety is the most important thing. Safety and health, both actually. So in mining, of course, safety is the first most thing. It is important than anything else. अब मसला ये है कि सेफ्टी है क्या? सेफ्टी ये है कि आपने वो हैजर्ड्स जो हमें पता है with our experience in mining, and we know कि कौन कौन से हैजर्ड्स हैं. So when we are working, keeping those hazards हमारे साथ रहेंगे. Even you are crossing the road, there's a possibility that you can get hit by a car. So the risk is there, but you know it. उसको अवॉइड करने के लिए आप एक तरफ देखते हैं, फिर दूसरी तरफ देखते हैं, फिर वेट करते हैं कोई चीज़ ना हो तो. So you know it. So आप जब उसको पार करते हैं तो you maintain an acceptable level of risk. So in this also we work with the hazards, and the risks are there, but we keep them in the acceptable limit. So this is very important, safety. And the more we know about the hazards, the more we can gauge the और मैं पहले ये बात कर चुका हूँ कि देखें, जो भी आप काम करोगे उसके अंदर कोई ना कोई मसला तो होगा. चाहे वो आप घर में ही काम कर रहे हो, आपको ठोकर लग के आप गिर सकते हो. Construction, everywhere there is danger. दूसरा सेफ्टी इम्पोर्टेंट है कि लेट्स से आप एज एन एम्प्लॉयर फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपके आपके जो अब लेट्स से यू आर एन एम्प्लॉयर, और अगर आपके जो वर्कर्स हैं दे आर इंजर्ड, इट हैम्पर्स योर प्रोडक्शन. आपका कारोबार मुतासर होगा, आपकी माइनिंग मुतासर होगा. सो सेफ्टी अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो आपका कारोबार भी नहीं चल पाएगा. माइन विल नॉट वर्क. दूसरी बात यह है कि एज लेट्स से माइन ओनर और एन इंजीनियर और मैनेजर, अगर आपके लेबर्स या आपके जो माइनर्स हैं दे आर इंजर्ड, देन यू हैव टू पे फॉर देम. फिर उसके बाद जब वो फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस, प्लस इफ ही इज नॉट वर्किंग देयर यू आर लीगली बाउंड टू पे हिम. So somebody is not working and you are paying him, you are paying the medical bills. So this will affect you in. So better take a precautionary measures, safety, so that you don't have to spend money, time, and also you don't have to stress about it, and also you can save. You have to save lives. I mean, as a human. So इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेफ्टी, चाहे वो एम्प्लॉयर है चाहे वो वर्कर है, उसकी अपनी जान की इबादत है. मैनेजर है जिसने प्रोडक्शन को स्मूथ रखना है, एवरीवन, सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. इवन प्रॉफिट को अफेक्ट करती है. जैसे बात की, अगर आपके बहुत ज्यादा आपकी माइंड बंद हो सकती है, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, सो you can just get a lot of problems with safety. Let's see this video to सी किस किस्म के माइन के अंदर आपको रिस्क या हैजर्ड्स आपको नजर आ सकते हैं एक माइन के अंदर. लेट्स सी. मुझे पता है कि माइन के अंदर इस तरह से आपकी जो ये हॉलेज हो रहा था, दिस इज अ मैन होल. अच्छा, ये मैन होल क्यों होता है? लेट्स सी, लेट्स डिस्कस दिस. मैन होल, अच्छा यहाँ पे आपको नजर क्या आ रहा है? इस मैन होल बेसिकली दीज आर, ताकि जब आपको कोई डेंजर हो तो एक शख्स जो आ रहा है तो वो इसके अंदर छुप सके. या इसी तरह हॉलेज जो वैन आ रही है अगर आपकी, तो आप इस साइड पे होने के लिए एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप खड़े हो सके.
अब इस मैन होल के अंदर इन्होंने क्या किया, वेस्ट मटेरियल डंप किया है, तो जगह तो नहीं है बंदे के खड़े होने की, सो दिस इज सेफ्टी हैजर्ड, दिस शुड बी अवॉइडेड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्पोर्ट्स लगी हुई हैं। इसके अंदर आप एक और चीज देख रहे होंगे कि ही हैज लाइट which in mines is very important on the helmet. You can't see, it's dark mostly inside. So this is another important safety aspect you should keep in mind. This is not safe, of course. I mean, you cannot like you should not be walking on the runway. It's not a good idea. So this can hit pretty much. I mean, so this is very like uh, a typical thing. I mean, because you don't know, it approaches you and you don't have the time to move. So the safe procedure is to जब आपको आवाज आए, you should go into the जो manhole है, and plus should not be walking on things which you should not supposed to walk on. सेफ्टी के हवाले से जो सेफ्टी मैनेजमेंट है, ये बेसिकली सेफ्टी मैनेजर्स भी होते हैं, और हर इंजीनियर का भी ये रोल होता है कि उसका काम है कि वो सेफ्टी प्रोग्राम डेवलप करे। आपको ये देखना है कि जो सेफ्टी मैनेजमेंट के हवाले से कि आपकी जो वर्क साइट की इंस्पेक्शन करना चाहिए, रिस्क असेसमेंट करें कि एक जगह एक साइट है उसके ऊपर कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। लेट से आप माइन के फेस पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन का इशू हो सकता है, तो आपको वहाँ चाहिए कि आप चेक करो कि ऑक्सीजन लेवल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह के लेवल्स क्या हैं। अब फिर दूसरा ये है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कीप इट देयर, कीप अ ट्रैक ऑफ इट, ताकि वो दोबारा ना हो सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर उसकी बेस के ऊपर अपनी आप जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उनको रिवाइज करें। तीसरी चीज, चौथी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन है। व्हेन यू हायर समवन, ही शुड बी qualified to do that job. I should be experienced enough to do that job. Inexperienced आदमी will create, let's say, blasting engineer. Blasting के जो लोग हैं, they should be experienced, properly qualified होने चाहिए, so they know what they are doing. उसके बाद employee training है safety के बारे से. This is very important कि periodically हर 2 महीने के बाद, 3 महीने या क्वार्टर के बाद सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मुख्तलिफ इंसिडेंट्स अगर पेश आते हैं तो कैसे उसमें रिस्पॉन्ड करना है। आग लगे तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, माइन के अंदर अगर गैस भर जाए तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इसकी ड्रिल्स की जाती हैं। अगर कोई अनकॉन्शियस हो जाता है या कोई इंजर हो जाता है तो उसकी फर्स्ट एड कैसे करनी है। सो और जो आप एक्शंस लेते हैं इसके ऊपर, यानी अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसके ऊपर क्या आपने एक्शन लिया, उसको भी ट्रैक करें। और जो आइटम्स चाहिए जैसे फर्स्ट एड बॉक्सेस हैं या फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, दे शुड आल्सो बी प्रॉपर्ली ट्रैक्ड। सो एक सेफ्टी इंजीनियर या सेफ्टी मैनेजर हैज हिज हैंड्स फुल, ही हैज टू बी ऑन continuously risk assessment, continuously training, safety awareness. This is a job to keep aware everyone about safety. So it's a full safety engineer is actually a profession in it itself. Very very good profession. Supervise करना है. You need to educate everyone around you. फिर एडवर्टाइजिंग सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, इवन हम अगर आप एडवर्टाइजमेंट की पावर देखें तो अगर आप सर्फ लेने जा रहे हैं या टूथपेस्ट लेने जा रहे हैं, यू विल गो फॉर द टूथपेस्ट एंड यू विल ट्रस्ट द टूथपेस्ट व्हिच यू हैव सीन अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन, बिकॉज नाउ आफ्टर सीइंग अ लॉट you tend to develop a liking or the trust on that. Same is the a safety manager जो है उसकी भी ये जॉब है कि वो एडवर्टाइज करे हर जगह के ऊपर इस तरह के निशान होने चाहिए। लेट्स से ये प्रोटेक्शन है, यानी आपकी जितनी जो भी साइट है उसके ऊपर
हर जगह हमारे पास प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, हर जगह पोस्टर्स लगे होने चाहिए इंफॉर्मेटरी, जो लोगों को याद दहानी कराते रहें. सो द सेफ्टी थिंग नेवर गेट्स आउट ऑफ द माइंड ऑफ द वर्कर एट साइट. दिस इज द जॉब ऑफ द सेफ्टी मैनेजर टू कीप टू इंश्योर दिस. एंड उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है कि लेट से कोई हमारा स्पिल हो जाती है, वो भी सेफ्टी मैनेजर का काम है कि कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी एम्प्लॉयज़ को देना. दैट्स द जॉब ऑफ द सेफ्टी मैनेजर. ट्रेनिंग इस पे बात हो चुकी है, ये भी सेफ्टी मैनेजर का काम है कि ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करना. 8:30 सेफ्टी ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करना periodically so that everyone keeps on inspect करना फिर साइट्स को. इस पे बात हो चुकी है. जो सेफ्टी प्रोग्राम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डेवलप करना, हम बात कर रहे थे, सॉरी इंटरनेट वेंट ऑफ अ लिटिल. सो सेफ्टी प्रोग्राम डेवलप करने के लिए जो वन ऑफ द कुछ स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहले तो ये है कि हमारी सेफ्टी पॉलिसी अनाउंस करना. ये सेफ्टी मैनेजर का काम है कि व्हाट्स आवर सेफ्टी पॉलिसी, और फिर एक सेफ्टी पॉलिसी के बाद एक सेफ्टी चीफ अपॉइंट होना चाहिए. एंड देन जितने भी ऑपरेशनल इंजरी हुई हैं उसका रिकॉर्ड देखना चाहिए पीरियोडिकली. फिर इसको रिव्यू भी करना चाहिए अपनी सेफ्टी पॉलिसी को. उसके अंदर कोई एडिशंस करनी है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस और द एक्सीडेंट्स व्हिच हैव हैपेंड. And then that's how. Hello, my name is Sid. You may recognize me from some of my earlier work. No entry, no running, and my favorite caution, slippery surface. Of course, my work doesn't just stop there. I've also done no diving, no pushing, watch out for falling objects, and I've had my share of slips, trips, and falls. I've been electrocuted, stood on a cliff, and even been set on fire. However, I am a trained professional, so don't try any of this on site. But when it comes down to it, I'm just like you. I live an active life. I like to windsurf, canoe, hike, skateboard, swim, hang out with friends, water ski, ride a bike, ride a horse, wear a dress, dive, read a good book, go to work in my pants, and sometimes shoot stuff. I keep clean, recycle, and have a massive pair of scissors and a comb. So you could say I've been around a bit, but let's face it, most of the work I do can be avoided. Like wearing a harness at heights in case you fall. Be aware of your environment. Stay away from obvious hazards. And don't stand underneath or in between big things that can squish you. In our line of work, we all need to put a little bit of thought into safety when we're designing a project. For example, wouldn't it be better if the safety switch wasn't located behind two giant fans at the base of an electrical shaft? Or if there was a way of working at heights without actually working at heights? Maybe we could make some of the big stuff somewhere else and just bring it in when we needed to, and then just put it together on site. If only we could travel into the future to see how design decisions made today can have an impact on tomorrow. When this office was designed and built, a certain type of carpet was used in the fit-out. Unfortunately, everyone blamed Mr. Plumpton's love of experimental cooking, particularly his sprout and camembert pie, for the nausea and obnoxious gases that were making everyone sick. The real culprit was actually the carpet, off-gassing, slowly releasing toxic fumes. Getting rid of Mr. Plumpton didn't really help. And who would have thought that when Sam here was digging a trench, because it wasn't properly shored, he was actually digging his own grave. But that's not all. Even some of the simplest design decisions can have huge implications. When this hospital was finished, the height of the light fittings and the need for extra bed space meant that the only way to change a simple light bulb was by trampoline. Even something simple, like opening a window, could be a potential hazard when not considered properly. If we journey further into the future, we can see how mankind has evolved to adapt to deal with these hazards.
For example, the problem of falling objects, and indeed falling people, will be a thing of the past. And that those hard-to-reach places will no longer be considered hard to reach, but more a test of skill and flexibility. But problems seldom go away. They're just replaced by new ones. The reality is, we don't have a time machine, and it's unlikely we will change into flying rubber people. But the WHS laws around the country have changed. We now have a responsibility to remove hazards through the design process. At Lang O'Rourke, we want to lead the way in smarter thinking and safer design in the life cycle of our projects, construction, design maintenance, operations, and demolition. The smarter we are, the safer we become, which means more construction off-site, less working at height or in confined spaces, fewer accidents now and in the future, shorter delivery times, and happier clients. So please, think about the decisions you make today and the impact they'll have tomorrow. See you around and stay safe. यहाँ से एक चीज जो आपको नजर आती है वो ये है कि ना सिर्फ सेफ्टी ये है कि हमारे एक्शंस के अंदर है, बल्कि एज एन इंजीनियर जब हम माइन डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर भी सेफ्टी को रखना, स्विचेस कहाँ लगेंगे, वेंटिलेशन डक्ट्स कैसे आ रही हैं हमारी, ब्लास्टिंग कैसे होनी है, ब्लास्टिंग का लोगों को बताना कैसे है, ये वो सारी चीजें हैं जो हम डिजाइन कर सकते हैं सेफ्टी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने डिजाइन में भी सेफ्टी को लेकर आना। इसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट की। अगेन वेरी क्रिटिकल है, हार्ड हैट्स होनी चाहिए। ये आपका पीपीई है, इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ग्लव्स हैं। और ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि देखें ये आपकी जान बचाने वाली चीज़ें हैं, ये आपको किसी जो एम्पुटेशन से बचाने वाली हैं, किसी मजदूरी से बचाने के काम आ सकती हैं। ये आपके स्टील टो शूज़ हैं, मास्क है, क्योंकि देखें आप थोड़ी बहुत कोल इनहेल करते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन वन डे योर लंग्स विल you're taxing your lungs actually then, and eventually it will rupture your lungs and lung failure हो सकता है। इसी तरह वेस्ट हैं ताकि आपको लोग देख सकें, रिफ्लेक्टिव वेस्ट माइंड्स के अंदर। सो protective gear is very very important when you're doing your job। safety goggles हैं, clothing आपकी ऐसी होनी चाहिए, वर्क ग्लव्स हैं हमारे पास, केमिकल रेजिस्टेंट, हमारे ग्लव्स केमिकल रेजिस्टेंट होने चाहिए और जिल्द को बचाएं। फिर माइनिंग के हवाले से जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गैस डिटेक्टर्स, क्योंकि आपकी माइंस के अंदर गैस भर सकती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे आपको नजर आ रही है, बड़ी टॉक्सिक गैसेस हैं। एंड कई बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस ऐसी हैं, दे डोंट हैव अ स्मेल, यू जस्ट कीप इनहेलिंग इट until you die and you don't even know. So gas detectors are very important safety equipment at mines. This should be at every mine. आई वॉश स्टेशन हैं, अगर आपकी आंख में कुछ गिरता है तो यू शुड हैव आई वॉश स्टेशन जहाँ पे जाके लोग अपनी आंख को साफ कर सकें, क्योंकि अगर कोई कोई एसिडिक चीज आपकी आंख में चली गई है और उसको रिमूव ना किया जाए विद इन टाइम, इट कैन कॉस्ट यू योर आई एक्चुअली। आई वॉश स्टेशन शुड बी देयर। ईयर प्रोटेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इसको निगलेक्ट किया जाता है, बट जो माइनिंग मशीनरी है इट हैज़ अ लॉट ऑफ नॉइज। सो इफ यू कीप इन दैट नॉइज फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड, आप 2-3 साल बाद जॉब करते हैं, सो यू विल बी लूजिंग योर hearing ability, and this can cripple your life actually. So it's very important कि ear protection भी इस्तेमाल की जाए और लोगों को ये और बाकायदा वहाँ पे नॉइज लेवल की मॉनिटरिंग की जाए कि अगर नॉइज लेवल ज़्यादा है जिन जगहों पे, वहाँ पे इसको मस्ट करार दिया जाए। एज एन इंजीनियर दिस इज अवर ड्यूटी कि इन चीज़ों को इंश्योर करें और लोगों की सेहत और उनकी सेफ्टी का ख्याल करें। डस्ट मास्क एंड रेस्पिरेटर्स अगेन, क्योंकि जब आप माइन कर रहे होते हैं, स्पेशली आजकल जो मैकेनिकल माइनिंग है, बहुत ज़्यादा फाइन डस्ट। अगर आप आयरन माइन में हो तो फाइन आयरन, कोल में हो तो फाइन कोल, ये वो चीज़ें हैं जो आप माइन के अंदर काम करते हुए कॉन्टिन्यूसली इनहेल कर रहे होते हो, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल take toll on your lungs. So just to keep them protected,
all the time. It is the duty of the engineer to recognize कि कहाँ कहाँ माइन के अंदर हमें मास पहनना लाजमी है और फिर उसको इंश्योर करना. सेफ्टी साइंस माइंड पे होने चाहिए. इलेक्ट्रिक्यूशन है, चाहे वो आपका सिगरेट ना पीने के वाले से है, खाना पीने ना पीने के वाले से है, कुछ इसी तरह शूज़ पहनना मस्ट, जो लाजमी पहनने के हवाले से, ईयर प्रोटेक्शन के हवाले से, ये सारे वो साइंस हैं जो माइन के अंदर पोस्टेड होने चाहिए जहाँ जहाँ पर ये ज़रूरी है. ये भी एज अ सेफ्टी इंजीनियर या एज अ माइनिंग इंजीनियर इन चार्ज ऑफ द माइन, दिस इज़ योर जॉब टू इंश्योर कि ये चीज़ माइन में हो रही है. फर्स्ट एड किट्स मस्ट, एक फर्स्ट एड किट्स होनी चाहिए. एंड नंबर टू, फर्स्ट एड किट को यूज़ करना भी की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट at any mining site. Miners work in dynamic and unpredictable conditions. They are exposed to health and safety hazards. Mining companies are constantly working to make this environment safe. What if there is a smart and intelligent way to make the environment in mines safer? Meet Joel and Samuel. They are two miners who work at Smart Mine, a technology-advanced mining company. Today, they have been tasked to prepare the mine face for blasting. Let's see how they plan to do this. Joel and Samuel start off by wearing their smart gear, which is integrated with a wearable technology. The jacket has an integrated smart sensor, which monitors their vitals such as heart rate, blood pressure, fatigue level, ECG. It also has the capability to detect dangerous contaminants like carbon monoxide. The helmet comes with a hands-free communication system, which helps Joel and Samuel to communicate with other miners and the mine operations room. A smartwatch is handy as it helps them map their route in the mine. With their smart gear, their location gets updated into the system. Joel and Samuel plot the safest route to the site on their smartwatch. They follow the mapped route to the location and arrive at the destination. Joel looks at the proximity location of other miners and machines in the area and alerts them that they are going to detonate the explosives. The explosion happens. Rocks fall and there are some dangerous contaminants in the atmosphere. Joel and Samuel are trapped. They start feeling dizzy. The vital signs, blood pressure, ECG, are in the abnormal range. The smart gear automatically triggers an alert to notify the mining operations room and other miners. The mining operations room notifies the nearest rescue and emergency services. The rescue team is able to locate Joel and Samuel on their smartwatch and maps the safest route to rescue them. The operator at the same time is able to monitor Joel and Samuel's vitals and communicate this with the emergency services. The rescue team arrive and pull off the boulders and gets them out of the mine. The vital signs show some improvement. The paramedics arrive on time. Joel and Samuel are back safe with their families. The wearables kept everyone informed about the health and safety of the miners. What you have just seen is one among the many possibilities of wearable technology in the mining sector. Imagine the possibilities. Deloitte Wearable. uh, Again, this was how we can use टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी. पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा रूम है इसमें काम करने का. और देखें, हम एक ऐसा मुल्क हैं जहाँ पे हमें चाइना की इंतहाई फ्री और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, विच वी कैन यूज़ टू मेक अवर माइंड वेरी स्मार्ट एक्चुअली. और बहुत सारी जानें बच सकती हैं. सो एज एन इंजीनियर व्हेन यू पास आउट एंड यू गो टू अ माइन, so the first thing you should keep in mind is not improving the production but improving the safety. You will improve the safety and the production will follow. Keep that in mind, क्योंकि अगर आपका वर्कर सेफ है, खुश है, so things start happening. So when you graduate, keep in mind safety should be the first thing, and keep innovating in it. Don't wait for other people to come and help us. In Pakistan, we have to innovate it ourselves. Or it's technology is very cheap nowadays. आपको बस smart watches 2500 रुपए में मिल सकती हैं. And it's not a huge investment, and we can invest and make our minds smart and safer. So here my lecture on safety ends. सेफ्टी मतलब आप पूरा एक सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे आगे जाके, बट कीप वन थिंग इन माइंड,
Okay, this is just an introductory course. So we gave you a glimpse of the safety. Safety is a big thing in mining, and there is also a big career if you want to make it as a safety engineer. उसके लिए निबॉश के कुछ courses होते हैं वो आप कर सकते हैं, and you can make your career. It's a very good career actually. So thank you.